हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में तुम सभी का स्वागत है। दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले इसमें तुम लोगों को जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यानी स्टार्टिंग से ही सब कुछ होगा, कितना क्या क्या तुम्हारे सिलेबस में है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सॉलिड स्टेट चैप्टर के का इंट्रोडक्शन देते हुए उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में जो कुछ भी है टॉपिक, उन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ वेलकम एवरीवन in this chemistry class. So please join the class and learn about the chapter solid state. Just a minute, wait. फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों के जो चैप्टर है उसमें सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है, उसके बाद सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इतनी सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सॉलिड स्टेट। Now your topic on the screen. Solid state, general characteristics of solid and crystal system, ये टॉपिक होगा आज की क्लास का। लेकिन उससे पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है तो सिलेबस पे हम देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, इनके बारे में पढ़ना है। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एलिमेंट्री आइडिया। यूनिट सेल इन 2-dimensional and 3-dimensional lattice, calculation of density of unit cell, packing in solids, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in cubic unit cell, point defect, electrical and magnetic properties of सॉलिड, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो टॉपिक हम लेंगे चैप्टर के वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग इन क्रिस्टल, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, इंटरस्टिशियल voids, packing fraction, that is density of packing, radius ratio rule and coordination number in ionic compounds। तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, electrical properties of solid, and last is magnetic properties of solids. Now come on the introduction. Universe is made up of matter and energy. Matter constitutes the universe while energy is the factor which controls the interaction taking place in the universe. On the basis of different experiments and theories, it has been proved that universe is made up of very small particles. These particles are atoms, ions or molecules in molecular solids, atoms in element, and in ionic solids, ions. These particles never remain so solitary, and though solitary, these particles never remain solitary but are present as aggregates. In these aggregates, the physical state is decided by strength of interparticle forces holding these particles
together under condition present on Earth. The matter may exist simply in three physical states: solid, liquid, and gas. On the basis of flowing property, matter is divided into rigid and fluids. A solid do not have flowing properties, they are rigids, while liquids and gases both are fluids as they have flowing properties. So the matter is of two types, rigid and fluid. Rigid is a solid and fluid is a liquid and gas. Now come on the solid state. Solid state is that state attained by matter in which interparticle forces are strong enough to ease the translatory motion of particle, constituting the solid, however, vibrating and rotational motion remains continuous. In this state, constituents are arranged in such a fashion so that system or crystal lattice attains a state of lowest possible potential energy. क्रिस्टल लैटिस केमिकल बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रोवॉलेंट कंपाउंड पढ़ा था तो थोड़ा बहुत क्रिस्टल लैटिस के बारे में जाना था कि किस तरीके से क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं इन जनरल. The energy released during formation of crystal from isolated gaseous constituent is called lattice energy. Greater is the lattice energy, more is the stability of the crystal system. The solid state is characterized by its incompressibility, rigidity, and mechanical strength, or it is a state in which the constituent atoms, molecules, or ions are not free to show translatory motion and are closely packed. Now some characteristics of solids. Solids are rigid, almost incompressible, and have high density and mechanical strength. They have definite shape, mass, and volume. Their shape is characteristic and is independent to the shape of container. The constituents, atom, ions, or molecule have fixed position and are not able to show translatory motion owing to strong interparticle forces. However, oscillatory, vibrational, or rotational motions are possible. They are closely packed and thus in solid there is well-ordered molecular, atomic, or ionic arrangement. 4 point on heating, solids melt into liquid and the temperature at which melting is noticed at 1 atmosphere is known as melting point of solids. Now classification of solids. First, on the basis of arrangement of particles. On the basis of arrangement of particles, solids are broadly classified into crystalline solids and amorphous solids. First, we discuss on crystalline solids. In crystalline solids, the constituents unit, that is atoms, ions, or molecules, are arranged in an orderly array which is called crystal lattice. A regular long-range order three-dimensional arrangement is known as crystal lattice. Sugar and salts are crystalline solids. They have diffuse melting and are anisotropic. For example, silver, copper, iron, sulfur, phosphorus, and iodine. Also, major compounds like NaCl, KNO3, ZnS, quartz, etc. are crystalline solids. The second type of solid is amorphous solids. An amorphous solid is that in which constituent particles, atoms, ions, or molecules lie randomly. They resemble with supercooled liquids, that is butter, glass, rubber, etc. Quartz is the crystalline form of silica, SiO2, with the atoms in an ordinary network represented here in two dimensions.
यहाँ पे. And B, when molten silica solidifies, it bottoms give now the atoms for disorderly network. जब ये लिक्विफाई होता है इस तरह से फिर ये बॉटल में आ सकता है और इसके जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है. तो सॉलिड स्टेट में ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल सिलिकॉन ऑक्साइड के, और जब ये मोल्टेन स्टेट में होता है तो इसका अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है. Crystalline solids are also called true solids, and principle give in this section holds good for crystalline solids. Amorphous solids are also called as supercooled liquids or pseudo solids, as they have tendency to flow under their bound weight, e.g. glasses fitted in window because it's slightly thicker at the bottom and thin at the top. If amorphous solids are heated and then cooled slowly, they attain some crystalline character. That is why old glass object appears milky. Now, distinction between crystalline and amorphous solids. So, crystalline solid is known as true solids, and amorphous solid known as pseudo solids or supercooled liquids. तो क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखते हैं. अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है और इधर amorphous. In crystalline solid, 3D regular well-defined arrangement set to exhibit long range order regularly in external form gives crystal. And in amorphous solid, no such regular arrangement set to exhibit short range order, no regularity in external form. The second point is shape. Crystalline solids have well-defined crystalline regular characteristic 3D shape, while in amorphous solids have irregular shape. Melting point sharp, it melts at a particular temperature. It is crystalline solid. And amorphous solid diffuse, that is melts over a range of temperature. Enthalpy of fusion in crystalline solid definite and characteristic, but in amorphous solids no difference. Fifth property is directional dependence of properties. In crystalline solids, anisotropic, that is physical properties depend upon the direction, but this is crystalline solid is isotropic, that is physical properties are same in all directions. So anisotropic, in which physical properties depend upon all direction, and anisotropic, that is physical properties are same in all the direction. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक. क्लीवेज प्रॉपर्टी. Crystalline solid can be cut into pieces having plain and smooth surface with the help of shard. It cools. On the other hand, amorphous solids, on cutting into small piece, the surface of piece are irregular. Now example, metal, salts, polymers like HDB, high density polythene, etc. are the example of crystalline solids. Amorphous solid, that is glass, rubber, plastic. Amorphous silica, polymers like LDPE, low density polythene, etc. अभी टर्म यूज हुआ था आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपी, दोनों के बारे में शॉर्ट में बताया था. यहाँ थोड़ा सा और समझ लो. Amorphous substance differ from crystalline solid but resemble liquids in some way. The properties such as electrical conductivity, thermal conductivity, mechanical strength and reflective index are the same in all directions. Amorphous substances are therefore said to be isotropic. Crystalline solid, on the other hand, the anisotropic, that is their physical properties are different in different directions.
For example, the speed of light passing through a crystal varies with the direction in which it is measured. Thus, a ray of light entering such a crystal may split up into two components, such following a different path and traveling with a different speed. This phenomenon is known as double refraction. Thus, anisotropy is a strong evidence for the existence of ordered molecular arrangement in such material. It is shown in 1.3 figure नीचे दिया हुआ है, in which a simple two-dimensional arrangement of only two different kind of atom is depicted. इस तरह से. Now, on the basis of constituents, unit and interparticle forces, यहाँ हल्का आया है काफी, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो कि on the basis of constituent units and interparticle forces, the solids are divided into four types: ionic, metallic, covalent network, molecular. Molecular में भी तीन तरह के हैं: polar, non-polar and hydrogen bonded. These different types of crystalline solids are defined as, one by one हम देखते हैं. ये पहला है molecular solids. अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं उसको नोट करो. Molecular solids. Their crystals, crystals of molecular solids are constituted by molecules or identifiable uncharged species held together by van der Waals forces, that is dispersion force, London force, etc. They are assemblies of discrete molecules held together by weak van der Waals forces. Now, molecular solids are further classified into polar molecular solids, non-polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. तो पहले आते हैं polar molecular solid पे. Polar molecular solid, they are comprised of polar molecules held together by relatively strong dipole-dipole interaction. पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं? कोवैलेंट. ये तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जैसे कि H और Cl, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. तो polar molecules are comprised of, the polar molecular solid comprises of polar molecules held together by relatively stronger dipole-dipole attraction forces. The second, under ordinary conditions, polar molecular solids are either gases or liquids but exist as solid under certain conditions. They are soft and non-conductors of electricity. Their melting points and enthalpies of fusion are relatively lower but higher than those of non-polar molecular solids. Examples are solid sulfur dioxide, sulfur HCl, that is solid state of polar covalent molecule. Second type of molecular solids are non-polar molecular solids. They are made up of non-polar molecules or chemically unreactive atoms, that is noble gases, held together by weak van der Waals forces. Like polar molecular solids, they are also soft, have low melting points and enthalpies of fusion. Okay. Like polar molecular solids, they are also soft and have low melting points and enthalpies of fusion even lower than polar molecular solids. Third, they are non-conductors of electricity in solid as well as in fused state. Examples of these molecules are hydrogen solid, chloride, chlorine solid, bromine solid, iodine solid, and argon solid, etc. क्या है? Non-polar molecular solids. Molecular bonds,
This term is sometimes used for the weak van der Waal attraction forces. They are formed by polarizability originated at atomic level, as in noble gases, where orbitals are deformed due to mutual attraction between nuclei and electrons of neighboring atoms. Now, third type of molecular solids are hydrogen bonded molecular solids. ये जो यहाँ पे हल्के में लिखा है क्या है? Hydrogen bonded molecular solids. In this type of solid, the constituting molecules are held together by hydrogen bonds. Under ordinary conditions, hydrogen bonded compounds are liquids but they solidify into soft solid under normal temperature and pressure range. They are usually compressible and distorable. A general characteristics of molecular solids. The examples are solid water, solid HF, solid NH3, etc. Now, covalent or network solid. दूसरे तरीका है covalent या network solid. They are constituted by atoms held together by covalent bonds, forming giant atomic lattice. Because covalent bonds are strong and directional, so the atoms are tightly held at their position. The continuous directional and rigid bonding in lattice of covalent solids makes it a single large, almost incompressible molecule. These solids are hard, high melting, and have high enthalpies of fusion. They may even decompose before melting. In general, their melting points and enthalpies of fusion are lower than ionic solids, but some covalent solids having giant network may have higher melting point than ionic solid, that is diamond. In pure state, they are electrical insulators owing to non-availability of mobile electrons. However, in presence of impurities, they may conduct electricity and are known as semiconductors. Examples of these types of solids: boron, carbon black, black phosphorus, Bn, AIN, SiO2, SiC, etc. Now come on third type of solid, ionic solid. Ionic solids are formed by alternatively arranged cations and anions held together by electrostatic attraction forces or Coulombic attraction. In ionic solids, cations and anions are arranged to form such a crystalline lattice that potential energy of lattice is maximum. Now, third point. Owing to strong electrostatic interionic forces, they are held but brittle, not ductile or malleable, and have high melting points, enthalpy of fusion. Pure and solid is in pure and solid state, they are not good conductors of electricity because ions are not free to move. On the other hand, in fused state or in solution, they conduct electricity. They are readily soluble in water or other polar solvents, but insoluble or sparingly soluble in non-polar solvent like carbon tetrachloride and carbon disulfide. Now, metallic solids. Simply, they are called metals, and in them kernels, that is positive, and ions obtained from the metal atoms are held together by a sea of mobile electrons. That is, loosely bonded electrons obtained from metal atoms and are free to move. Due to presence of free mobile electrons, they are good conductors of heat and electricity. Electrons are responsible for the metallic luster and color of the metal. Also, they are malleable and ductile, that is, may be changed into sheets or oils due to varying strength of metallic bond.
Bond holding the metal atoms together, they may be hard or soft. Also, some of them have very high melting points and enthalpy of fusion, while for some others, melting points and enthalpies of fusions are along with attraction forces between kernels, that is positive, and electron repulsion and kernel repulsion also affect the strength of interparticle force. Now examples of metallic solids are metals and alloys such as brass, iron, copper, bronze, etc. Now comparison among different types of solids. Molecular solids constituting unit क्या होती है इसमें polar molecules, interparticle forces, dipole interaction forces. Example इसका HCl, SO2 and H3 जब ये solid state में होते हैं. Physical state क्या होगी? Soft solid with low melting points and enthalpy, and electrical property molecular solids की as a insulator, act as a insulator. Second types है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में ये बताया. दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो तरह के थे. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनकी प्रॉपर्टी भी देखा. फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं. इंटर पार्टिकल फोर्सेस इसमें है वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, फ्लोरीन, मीथेन. सॉलिड स्टेट में जब ये होंगे सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड, नेपथलीन एक्सेट्रा. फिजिकल स्टेट सॉफ्ट सॉलिड विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी? इंसुलेटर. थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. तो तीन तरह के हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, non-polar molecular solids और hydrogen bonded solids. Hydrogen bonded solids में constituents unit है molecules capable to form hydrogen bond. Interparticle force होता है इसमें hydrogen bond. Example ammonia, ice, glucose, etc. Physical state harder than first and second. इन दोनों solids के मुकाबले में harder. Low melting points and enthalpy the fusion, ये भी insulator. Now second type of solid is covalent or network solids. इसमें constituent units है atom, covalent bond होता है इनके भी. Example diamond जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, क्वार्ट्ज, सिलिका, बोरान, ब्लैक फास्फोरस, PN etc. very hard, high melting points, rigid and brittle होते हैं ये, and poor conductor except graphite में conductivity होती है. उसके बाद थर्ड टाइप है आयनिक सॉलिड. कंस्टिट्यूएंट्स में कैटायंस है एनायन. फोर्स होती है हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एग्जाम्पल ये सारे NaCl, KCl, KNO3, CuSO4, H2O, CF, ZNS के सारे हार्ड होते हैं, रिजिड, ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर इन फ्यूज स्टेट और इन सॉल्यूशन. सम सॉलिड कंडक्टर्स आर आल्सो नोन लाइक AgCl. नाउ मेटालिक सॉलिड्स. मेटल एटम कॉर्नेल्स एम्बेडेड इन C कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट है. मेटालिक बॉन्ड होता है इनके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में. एग्जांपल ऑल मेटल्स एंड मेटल्स एलॉय. Property होती soft to hard, low to high enthalpy of fusion, and these are the conductors of electricity and heat. Now crystal and crystal system. A part of crystalline substance is called crystal, and it is an aggregation of number of unit cells which constitute that substance. In crystal, constituent units from highly ordered structure by periodical arrangement in 3 dimensions. A crystal is characterized by the following parameters. First is phases.
Planar and well-organized surface of a crystal are called faces. Their arrangement is defined as result of integral geometry. Faces of crystal may be same or different. Second है form. All the faces corresponding to a crystal are said to constitute a form. उसके बाद है it is place of intersection of two adjacent faces. Interfacial ऐसे अभी डायग्राम दिखाते हैं. Interfacial angles. Crystals are bound by plane faces. The angle between any two faces is called an interfacial angle and is measured by goniometer. It may be noted that the size of the faces or even shape of the crystal of one and the same substance may vary widely with the condition of formation. इसका हम डायग्राम पहले दिखा दें. इंटरस्टेशियल एंगल्स ये क्या है? फेसेस है और इनके बीच का जो एंगल है ये क्या है? इंटरस्टेशियल एंगल इन द क्रिस्टल. तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी हो सकता है. तो सारी चीजें द टेंडेंसी नो फॉर एग्जांपल से हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम ऊपर चला जाता है. For example, sodium chloride crystals grow as you form a state solution, whereas they crystallizes as octahedron if a small amount of urea is heated to the solution. The tendency of a crystal to adopt a characteristic form is called the crystal habit. Although a crystal may have different shape, yet the interfacial angles between any two corresponding faces of the crystal remains invariable the same throughout. This is also known as law of constancy of interfacial angles or law of crystallography. Although the external shape is different, yet the interfacial angles are same. तो ये तुम्हारे फेसेस है क्रिस्टल में और ये इन दोनों के बीच का एंगल है जिसको कि इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं. Now size and shape of the crystal. Several naturally occurring solids have definite crystalline shape which can be recognized easily. There are many other solid materials which exist as powder or agglomerates of fine particles and appear to be amorphous. But when an individual particle is examined under a microscope, it is also seen to have a definite crystalline shape. Such solids in which the crystals are so small that they can be viewed only under a powerful microscope are said to be microcrystalline. The size of a crystal depends on the rate at which it is formed. Slower is the rate, bigger is the crystal. This is because time is needed by the ions or atoms or molecules to get into their proper position in the crystal structure. Thus, large transparent crystal of sodium chloride, silver chloride, lithium chloride, etc. can be prepared by melting these salts and allowing them to cool very slowly at a uniform rate. It is for this reason the crystal of most of the minerals formed by geological process are often very large. Now come on the crystal system. Crystal system is a method to classify the substance on the basis of their unit cell. On the basis of primitive or axial distance, ABC and interfacial angles are maybe only 7 unique basic crystal systems.
तो ये यूनिट सेल होती है, जिस तरह से क्रिस्टल का शेप होता है उसी तरह से शेप का जिन जिन यूनिट से मिल करके क्रिस्टल बनता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल पे हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहला है ये फेसेस कहलाता है और इनके बीच का एंगल जो है वो इंटरफेशियल एंगल्स है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। एक लेंथ क्या है, ये ABC, ये क्या है, एट और ये फेसेस है। एन इंटरफेशियल एंगल्स है, ये अल्फा बीटा गामा। ये यहाँ इसके बीच का एंगल है, ये इनके बीच का, ये इनके बीच का, ये फेसेस है इन द यूनिट सेल। तो ये पूरा क्या है, यूनिट सेल है। ये तुम्हारे एट है और ये फेसेस है, और फेसेस के बीच का एंगल कहलाता है इंटरफेशियल एंगल्स। In this crystal system, each unit cell is primitive. That is, constituents are present only at the corners. ये corners है जिसपे constituents present होते हैं। इस तरह से पूरा फिर से देखो, यहाँ पे ये corners है जिसपे कि constituents जो होते हैं एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल जो भी होंगे इन्हीं corner पे present होते हैं। In this crystal system, each unit is primitive. So 7 crystal system represent the 7 primitive unit cell. Now different type of crystal are given here. Crystal system, यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तभी दिखाई देगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक इस तरह से इसका यूनिट सेल इस तरह से होगा। प्रिमिटिव और एक्सियल डिस्टेंस है, इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा। तो इंटरफेशियल एंगल्स इनके बीच का भी बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। एग्जाम्पल ये सारे हैं इसके, फ्लोराइड, पायराइड, एनालसाइन, टेट्राहेड्राइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे, तो नोट कर सकते हो ये सारे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक सल्फाइड, डायमंड, एलम एक्सेट्रा। उसके बाद टेट्रागोनल किस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें A B यानी सामने सामने के तो बराबर होंगे, लेकिन C जो है ये बराबर नहीं होगा। वन प्रिमिटिव इज डिफरेंट अदरवाइज टू, लेकिन एंगल इनके बीच में तीनों इंटरफेशियल एंगल्स 90 डिग्री यानी बराबर होंगे। इनके एग्जांपल ये है हमारे, कॉपर सल्फ, कैल्शियम सल्फेट है, उसके अलावा TiO2 है, SnO2 है, एक्सेट्रा। उसके बाद है क्रिस्टल आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक कहते हैं। इसमें A और B और C तीनों ही एक के बराबर नहीं होंगे। ऑल द प्रिमिटिव्स आर डिफरेंट होंगे, एंगल्स बराबर होंगे। इनके एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, इस तरह के होंगे। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, तीनों A B C इसमें बराबर नहीं होंगे। ऑल द प्रिमिटिव्स आर डिफरेंट, एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन थर्ड जो एंगल है टू एंगल 90 डिग्री एंड थर्ड इज नॉट 90 डिग्री। इसके एग्जांपल ये सोडियम सल्फेट है, वाटर है, यानी जो आइस होगा, लेड क्रोमेट है, इस तरह के एग्जांपल यहाँ दिए हैं। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक, जिसमें A B C यानी ऑल द प्रिमिटिव्स आर डिफरेंट एंड angles between them are also not 90 डिग्री। एग्जाम्पल कॉपर से जो तुम्हारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड, ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल है। हेक्सागोनल क्रिस्टल इस तरह से होंगे जिसमें A इज इक्वल टू B यानी सामने के बराबर है, but not C, one primitive is different. Two angles 90 degree and the third is 120 degree। और कहीं पे ये किसी में ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो 60 डिग्री भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये है ZNO, CDS, ZNS, इस तरह के क्या है, हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं। अब आ जाओ ब्रेव लैटिस पे। ब्रेविस या ब्रेव्स 1848 proposed that on the basis of geometrical consideration there can be only 14 different ways in which similar points can be arranged in three-dimensional space. Thus the total number of space lattice belonging to all the 7 crystal systems put together is only 14. These are known as Bravais lattices.
The Bravais space lattice associated with various crystal system are shown. अभी देख चुके हो जिसको वही बताया है. The unit cell is described by the length ABC. The unit cell is described by the length A, B, and C of the three intersecting edges and the angle alpha, beta, and gamma between the pair of edge B and C. A and C and A and B respectively. तो इस तरह से इनके बीच का जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल्स, ये तुम्हारे एड हो गए और ये फेसेस हो गए. The crystal have four kinds of Bravais lattice depending on the shape of unit cell. These are first a simple or primitive lattice in which there are points at all the corners of the unit cell. It is labeled as PA. Primitive cubic unit cell is shown here. डायग्राम इसका बहुत हल्का आया नहीं है, इसको बुक से देखना तुम लोग. ये इस तरह से ये लाइन है यहाँ पे, तो ये डायग्राम बहुत ही हल्का दिख रहा है. इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से. इसका हम अलग से दिखाएंगे अगली क्लास में. इसका डायग्राम साफ नहीं आएगा. This unit cell consists of one atom at each of the 8 corners. तो 8 कार्नर इसमें, 4 कार्नर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं दिख रहा है. तो 8 कार्नर है, तो हर कार्नर पे एक एक एटम इस तरह की प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में पे होता है. उसके बाद दूसरा है, ये है बॉडी सेंटर्ड लैटिस. यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड लैटिस लिखा है, ये नोट कर लेना अपने से. बॉडी सेंटर्ड लैटिस in which there are points at all the corners as well in the center of the unit cell. all corners पे point होते हैं, उसके अलावा इसके center पे यहाँ पे एक point है. It is labeled as first. For example, in body centered cubic unit cell there are 8 atoms at the corners. 8 atom corners पे है, by each shared by 8 unit cell and one at the center belonging to only one unit cell. यानी बीच में यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड लैटिस में 8 पॉइंट है, यहाँ पे 8 एटम्स है, उसके अलावा बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे कि एक पार्टिकल होता है. दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट. जो यहाँ पे हल्का हो गया है, कम दिख रहा है, वो यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल. तीसरी है फेस सेंटर. यहाँ पे तो हल्का हो गया, यहाँ दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसका. इन विच देयर आर पॉइंट्स एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच फेस. हर फेस पे एक एक सेंटर, यहाँ पे भी एक एक पॉइंट होते हैं जहाँ एटम होता है. तो हर कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा हर फेस, ये फेसेस है, इस पे हर फेस पे बीच में एक पॉइंट होता है. in which there are point at the corner as well as the center of the each face. It is labeled as F. In a face centered unit cell there are 8 atoms at the corners, each shared by 8 unit cell and 6 at the faces. 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, and 6 at the faces, each shared by 2 unit cells. एक जो इधर की साइड में यूनिट सेल होगी वो इसको शेयर करेगी. इसी तरह इसके सामने वाली जो फेस होगा वो इस यूनिट सेल का फेस वो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इसके सामने वाला जो फेस होगा अगले यूनिट सेल का वो. तो ये सभी 6 फेसेस की और दूसरी जो यूनिट सेल के 6 फेसेस होंगे वो भी इस इलेक्ट्रॉन को या इस पॉइंट को शेयर करेंगे. सेकंड है एंड सेंटर्ड लैटिस. ये स्ट्रक्चर इस तरह से एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर है इसका. इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इन विच देयर आर पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द 2 फेसेस. सेंटर ऑफ द 2 फेसेस, ये ऊपर और ये नीचे दिख रहा है. It is labeled as C. For example, in an end-centered orthorhombic unit cell, there are 8 atoms at the corners and 2 at the
जो 2 फेसेस पे 2 सेंटर है and the 2 at the face and faces. अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस। क्यूबिक का स्ट्रक्चर इस तरह से है। क्यूबिक में 3 तरह के हैं, एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। उसके बाद टेट्रागोनल में है सिंपल टेट्रागोनल, के बाद बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक में इस तरह से है ये सारा, सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंट्रल आर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक एंड फेस और एंड सेंटर्ड। उसके बाद है मोनोक्लिनिक में 2 तरह का है, सिंपल मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर्ड मोनो क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक इस तरह का स्ट्रक्चर है। उसके बाद सारी चीज भी दी हुई है साथ में, कितना एंगल और कौन बराबर है कौन से नहीं। ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, इस तरह से ये पूरा सिस्टम है। तो एक बार और हम यूनिट सेल के बारे में समझ लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे फिर हम आगे के क्लास में इसको बताएंगे। तो द क्रिस्टल है 4 काइंड ऑफ ब्रेविस लेटिस डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द यूनिट सेल। तो पहले क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल in which there are points at all the corners of the unit cell. It is labeled as primitive cuboid cell. तो सेल उसी तरह से इस तरह से ये बना होगा ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे, बुक में देखना ये मिल जाएगा। प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है तो 8 कार्नर्स पे पॉइंट है जिसके पास एक एक एटम हर कार्नर पे होंगे, यानी इस यूनिट सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड लेटिस इन विच देयर आर पॉइंट्स एट ऑल कार्नर्स एज वेल एज इन द center of the unit cell. It is labeled as I. For example, in a body centered cubic unit cell, there are 8 atoms at the corners and 1 at the center, belonging to only 1 unit cell. सिर्फ इसी में शेयर होता है इसका। उसके बाद है फेस सेंटर्ड लेटिस, ये है, ये बीच में हल्के कलर से दिख रहा है येलो। तो in which there are points at the corner as well as at the center of the each face. It is labeled as F. In face centered unit cell, there are 8 corners at the each corner shared by 8 unit cell and 6 at the faces shared by 2 unit cell. Now second, end centered lattice, in which there are points at the corner and at the center of 2 end faces. It is labeled as C. For example, in an end-interpreted rhombic unit cell, there are 8 atoms at the corners and 2 at the faces. तो यूनिट सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देखा तुम लोगों ने, ये सारा हर तरह के यूनिट सेल का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें। तो अगले क्लास में हम यूनिट सेल से रिलेटेड और भी जो तुम्हारे चैप्टर में है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मालूम होने के बाद सॉलिड सिस्टम समझ में